Good morning, student. Today I will teach you about the basal ganglia, that is the part of the structural part of the cerebrum. So it is a most important terminology while we are discussing about the cerebrum. It refers to a group of nuclei which is located within the cerebral hemisphere, means basal ganglia. It is a group of like cell body that lies deeply within the brain, and it form the part of the extrapyramidal tract, and it is deeply located in the cerebral hemisphere. मीन्स ये जो है एक तरह का सेल बॉडी का एक ग्रुप होता है जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड होता है, एंड दे आर द पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर सिस्टम, एंड दे आर प्रिंसिपली इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ पोस्चर एंड मूवमेंट. और मेनली जो ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, जो इनका फंक्शन है, दे आर दे इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ पोस्चर एंड मूवमेंट. हमारे पोस्चर्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं बाय इनिबिटिंग द मोटर फंक्शन. कोई भी मोटर फंक्शन हम करते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स, विद द कोई भी मूवमेंट हम करते हैं, तो उस मूवमेंट को सही तरीके से परफॉर्म होने के लिए ये क्या करते हैं, जो मोटर फंक्शन होता है हमारा, उसको इनिबिट करते हैं, जिससे कि हमें एग्जैक्ट जो हमको फंक्शन परफॉर्म करना है, जो भी मोटर एक्शन परफॉर्म करना है, वो एग्जैक्ट वही हम परफॉर्म कर सकें. नेक्स्ट वन इज basal function of basal ganglia. They act as a relay station. What is relay station? The relay station, it is a relay station, like it restore all the type of connection. It restore all type of connection and transfer the other channels. So the basal ganglia, it act as a relay station with the connection to many parts of the brain, including the motor area of the cerebral cortex and the thalamus. Next one is the other function include like initiation. Initiation means शुरुआत करना. So it include the initiation and fine control of the complex movement and learned coordinated activity like posture, walking. So these all are the function of basal ganglia. Next one is function of cerebral cortex. हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा है, तो अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सो देयर आर मेन 3 फंक्शंस. फर्स्ट वन इज हायर ऑर्डर फंक्शन, सेकेंड वन इज सेंसरी परसेप्शन, एंड थर्ड वन इज other voluntary movement and muscle contraction. So in the first one is higher order function. In the higher order function, that is the mental activity which is involved in the like memory, sense of responsibility for anything, thinking, reasoning, moral decision making and learning. So these all are the higher function of the cerebral cortex. Next one is sensory perception. Sensory means संवेदना से रिलेटेड, संवेदना ग्रहण करना. सो सेंसरी परसेप्शन लाइक परसेप्शन ऑफ पेन, परसेप्शन ऑफ टेम्परेचर, परसेप्शन ऑफ टच, साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, ये सारी चीज़ें जो है हम परसेप्ट करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं, संवेदित करते हैं. तो ये सारे फंक्शंस भी हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के. नेक्स्ट वन इज इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन. स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो स्केलेटल मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करते हैं. एंड देयर फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट. सो यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट स्केलेटल मसल परफॉर्म द वॉलेंट्री मूवमेंट, है ना. स्केलेटल मसल से वॉलेंट्री मूवमेंट हम परफॉर्म करते हैं, तो उस जो हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, दैट मीन्स जो हमारा मोटर एक्शन होता है जो हम परफॉर्म करते हैं, उसको जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ बेसल गैंग्लिया. नेक्स्ट वन इज आई विल टॉक अबाउट द gyri, that is ridge, and the sulci, that is groove. The cerebral hemisphere appear as the highly convoluted means complex masses of the gray matter that are organized into a folded structure. The crest of the cortical folds are called gyri, and these are the separated by the furrows. Furrows means a long narrow ditch or any type of groove. That means आप ये बोल
बोल सकते हैं एक तरह की खांच, दैट इज कॉल्ड द सल्काई और द डीप फिशर। तो यहाँ पे क्या है, जो आपको जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको एक गायरी और एक सल्काई मिलेगा। मतलब कि गायरी मीन्स उभरा हुआ भाग, टॉप पोर्शन, एंड सल्काई दैट इज ग्रूव, ये मतलब कि वो खांच वाला पोर्शन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो कॉर्टेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, तो उसमें आपको गायरी और सल्काई दोनों ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। द फोल्डिंग ऑफ द कॉर्टेक्स इनटू गायरी एंड सल्काई इट परमिट द क्रेनियल वॉल्ट टू कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ कॉर्टेक्स, नियरली about 50% ऑफ विच इज़ हिडन विद इन द सल्काई एंड फिशर। तो मैक्सिमम इसकी वजह से क्या होता है, जो सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है वो अपना लार्ज पोर्शन को कवर कर लेता है विद द हेल्प ऑफ गायरी एंड सल्काई। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल टर्मिनोलॉजी ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। Next one is the functional area of cerebral cortex. Before this I told you about the function of cerebral cortex, and next one is the functional area. So in the cerebral cortex there are three types of functional area. First one is motor area, second one is association area, and third one is sensory area. So in this first under the motor area of the cerebral cortex, the first one is first one is primary motor area. So this one is the primary motor area. Next one is Broca area, that is motor speech area. So this is the motor speech area. Next one is sensory area of the cerebral cortex. Under the sensory area of the cerebral cortex, first one is somatosensory area, second one is auditory, that means hearing area, third one is olfactory, that is smell area, next one is taste area, so this is the taste area. Next one is visual area, this is the visual area. And the third area, that is called association area. In the association area there are also three types. First one is premotor area, second one is prefrontal area, and third one is sensory speech area, that is also called Wernicke's area. ठीक है, तो ये जितने भी एरियाज है ये क्या है, मेन फंक्शनल, दीज आर द मेन फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरिब्रम. सो फर्स्ट इज primary motor area. So this is the primary motor area. Primary motor area it lies in the frontal lobe. तो ये सबसे पहले क्या चीज़ है इसके बारे में कि ये फ्रंटल लोब में ये सिचुएटेड होता है. नेक्स्ट वन, इन द मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रम द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड द अपर मोस्ट कंट्रोल ऑफ द फीट एंड दोज इन द लोएस्ट पार्ट विच कंट्रोल द हेड, नेक, फेस एंड फिंगर्स. तो ये जो एरिया है क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है. फर्स्ट थिंग क्या है इसमें, जो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई इसमें सबसे पहले ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल द फीट, कंट्रोल द हेड, कंट्रोल द नेक, फेस एंड फिंगर्स. नेक्स्ट वन इज motor speech or Broca's area. So this one is motor speech area. This is situated also in the frontal lobe. Primary motor area also situated in the frontal lobe, and the motor speech area, this is also situated in the frontal lobe just below the lateral sulcus, and it control the muscle movement which is needed to produce the speech. ये जो motor speech area है ये भी क्या है, फ्रंटल लोब में सिचुएटेड है, और ये क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल द मसल मूवमेंट विच इज़ नीडेड फॉर द स्पीच. स्पीच के लिए जो मसल मूवमेंट होते हैं इसको ये कंट्रोल करता है. नेक्स्ट थर्ड वन इज sensory area of the cerebral cortex. Sensory area of the cerebral cortex. So under this first one is somatosensory area. So in the somatosensory area, this is the area just behind the central sulcus, and where the sensation of pain, sensation of temperature, pressure, touch, awareness of muscular movement, and the position of the joint are perceived. And this area of the right hemisphere can also receive the impulses from the left side of the body.
So this is the function of somatosensory area. Next one is auditory and hearing area. This lies immediately below the lateral sulcus and within the temporal lobe. So this area is situated in the temporal lobe. The nerve cells receive and interpret the impulse which is transmitted from the inner ear to the auditory part of the eighth cranial nerve, that is vestibulocochlear nerve. So this is the function of auditory area. Next one is olfactory area. Olfactory area, this is lies deep in the temporal lobe. यहाँ पे ये जो olfactory area है आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, डीप लाइस होता है, डीपली लोकेटेड होता है किसमें, टेम्पोरल लोब में. So olfactory area, it is deeply located in the temporal lobe, and where the impulses from the olfactory epithelium of nose transmit through the olfactory nerves and received and interpreted by the olfactory area. Next one is taste area. So this one is taste area. This is also lies in the deep layers of the somatosensory area. Means taste area is deeply situated in the somatosensory area, layers of the somatosensory area, and here the impulses from the sensory receptor in the taste bud are received and perceived at the taste. यहाँ पे जितने भी sensory receptors हैं उनको receive किया जाता है with the help of taste bud, और उसके थ्रू हम टेस्ट को परसीव करते हैं, यानी कि टेस्ट जो भी चीज़ हम ले रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, जो भी हम फूड ले रहे हैं या फ्रूट या कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है. Next one is visual area. So this is the visual area. It lies behind the parieto-occipital sulcus. So it is situated in this part. So the optic, it is the greater part. It is situated in the greater part of the occipital lobe. This is the occipital lobe, and the visual area, it is situated in the deep part of the occipital lobe. The optic nerves passes from the eye to this area, and which receive the and interpret the impulses like an visual impression. Visual impression means हम देख रहे हैं सामने वाला पर्सन क्या है, कितना लंबा है, उसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है, उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ऑल अबाउट द विजुअल फील्ड. जितने भी विजुअल फील्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये उनको इंटरप्रेट करता है और साथ ही साथ रिसीव करता है. Next one is association area. In the association area, firstly this is the premotor area. So the premotor area, it also situated in the frontal lobe, and this is also situated in the frontal lobe, immediately anterior to the motor area, and it ensuring the learned pattern of the movement that can be repeated. Like जैसे कि प्री मोटर एरिया में जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, कोई भी चीज़, जैसे कि सपोज हमने साइकिल चलानी सीखी या हमने बाइक चलाना सीखा या हमने कोई भी ऐसा काम जो स्किलफुल है, हम कोई भी ऐसा काम सीखते हैं, उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक वो हमें हमेशा याद रखता है. जैसे कि हम कुछ दिनों तक अगर बाइक नहीं चलाते हैं, बाइसिकल नहीं चलाते हैं, तो हम उसको भूलते नहीं. हमने एक बार उसका पैटर्न सीख लिया तो वो हमको याद रहता है. सो the function of this type of activity is of premotor area. Next one is prefrontal area. Prefrontal area, this is also situated in the frontal lobe. It is a large area and highly developed in the human than the animals. It controls the intellectual functions, include perception and comprehension of the passage of time, ability to anticipate the consequences of event, and the normal management of the any type of emotions, like negative emotions also and positive emotions also. So these all are the function of prefrontal area. Next is the under the association area, there is one more area which is sensory speech area. Sensory speech area, this is the sensory speech area, also called the vernix area. Vernix area, this is situated in the temporal lobe. It's here that the language, both written and spoken, is perceived, and the comprehension and intelligence are based. So this is the function of vernix area. The function of vernix area, that is the language comprehension and both written and also in spoken form. Next one is brain stem. So cerebrum, the part of the cerebrum that is
the cerebrum, which is showing the main functional area, that is the premotor, prefrontal, motor speech, primary motor area, somatosensory area, sensory speech area, visual area, auditory area, taste area, and the olfactory area. Next one is brain stem. The brain stem, it is the lowest part of the brain stem, and it is the part of the central nervous system, and it controls the flow of message between the brain and the rest of the body. क्या है इसमें, क्या है, दिस इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का जो लोएस्ट पार्ट है दैट इज ब्रेन स्टेम, एंड इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द मैसेज. ये किसके बीच मैसेज को फ्लो करता है? ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. ब्रेन एंड बॉडी के बीच में मैसेज का फ्लो ये कंट्रोल करता है. इट कंटेन्स 3 पार्ट्स: मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लंगाटा. So midbrain, it controls the involuntary eye movements, reflexes, which is related to the visual and audio information. Next one is pons. Pons, it relays the message from the cortex. ये क्या करता है? pons cerebral cortex के से मैसेज को रिले करता है and to the cerebellum, and it is responsible for the facial sensitivity, and it also play a major role in the REM sleep when the dreams occur. What is the REM sleep? It is a kind of sleep that occurs as an interval during the night, and it is characterized by the rapid eye movement, more dreaming, bodily movement, faster pulse, and breathing. So these are the function of pons. Next one is medulla. It regulates the breathing, heart rate, digestion, sleeping, and also it play a main role in the regulating the muscle tone and the movement, and also responsible for initiating means शुरू करना, produce करना, initiating the reflexes like vomiting, swallowing, gagging, coughing, sneezing, and hiccuping. Hiccuping means like हिचकी. So these all are the part of the brain stem. So firstly start from the pons. The pons, it is located just superior to the medulla. So here this is the medulla and this is the pons. So it is located just superior to the medulla and inferior to the midbrain. तो ये क्या है? मेडुला के सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, इन्फीरियर टू द मिड ब्रेन मतलब मिड ब्रेन के नीचे. सो इट द लोकेशन इज द सुपीरियर टू द मेडुला एंड इन्फीरियर टू द मिड ब्रेन. द पॉन्स कंटेन द इम्पॉर्टेंट न्यूरल पाथवे विच इज अराइजिंग फ्रॉम द सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड. फ्रॉम द सेरिब्रम द न्यूरल पाथवे विच इज अराइजिंग, दैट इज द मोटर, एंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड द न्यूरल पाथवे विच इज अराइजिंग, दैट इज sensory, as well as the cerebellum also. And the pons functions is that the pons act as a relay station for this message, and in addition the pons contains the important center for the regulation of the breathing. So next is medulla. It carry out and regulate the life sustaining functions, that is breathing, swallowing, and the heart rate. The medulla, it is the most important part of the brain, and its function are involuntary. मतलब ये जितने भी involuntary functions हैं उनको control करता है. We would not be able to live without the medulla because the myriads of the crucial task it performs, like regulate blood pressure and the breathing. So here the word is myriads of the crucial task. Myriad means the countless. Myriad means countless, and crucial, that means critical task. medulla के बिना हम हैं वो लाइव नहीं हो सकते, मतलब हम किसी भी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते. क्यों? बिकॉज ऑफ द माइरिड ऑफ द क्रूशियल टास्क इट परफॉर्म्स. मतलब कि ये बहुत सारे ऐसे काउंटलेस बहुत ही क्रिटिकल टास्क हैं जो कि ये परफॉर्म करता है. लाइक हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है. नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, इट ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रांसफर द न्यूरल मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. ये भी सेम फंक्शन क्या करता है? जितने भी मैसेज हैं, न्यूरल मैसेज हैं, उनको क्या करता है? ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को
ट्रांसफ़र करने का काम करता है. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ मेडुला. Another important function of the medulla, that is reticular formation. So reticular formation, these are the cluster of neurons in the white matter that runs through the core of the brain stem, that involve in the maintaining the brain alert, arousal, sleep, and also control the visceral functions like heart rate, vomiting, etc. And the motor tract goes down the spinal cord, and it is also involved in the movement also. So these are the most important function of the medulla. So overall, there is a summary of the function of brain stem. So first, the function of medulla, that is the cardiac slowing center. So cardiac slowing center, the cardiovascular center, it control the blood pressure, rate, and force of the cardiac contraction. So in the term of the medulla, while we are discussing about the function of the medulla control the cardiovascular center. So how it control? So the vasomotor center, it is stimulated by the arterial baroreceptor. Body temperature and emotions such as sexual arousal, anger, pain usually cause the vasoconstriction. Severe pain may cause the vasodilation, a fall in blood pressure, and the fainting. So for all these, within the cardiovascular center, the muscle cell, the nerve cells which is situated in the medulla, that forming the vasomotor central control, which control the diameter of the blood vessels, especially in the small artery and arterioles. And according to the patient emotional condition, that either that is positive or negative, it control the vasomotor action. That means according to the mood of the patient, according to the situation of the patient, according to the emotions, it control the dilatation or constriction of the blood vessel. So second one is respiratory center. These area control the rate and depth of the respiration, and it also stimulate the contraction of the diaphragm and the intercostal muscles, and that's why it initiate the respiration. Next one is cranial nerves, that is glossopharyngeal nerves, vagus nerves, accessory, and hypoglossal, that all emerge, that means to come out from the medulla. They all come out from the medulla, as do the portion of the cranial nerves, that is facial and vestibulocochlear. So these are the functional part of the medulla. Next is pons. First one is cardiac acceleration and the vasoconstriction center. Same like the medulla, it also control the vasomotor function. Next one is pneumotoxic center, which helps to control the respiratory pattern and the rate. Next one is four cranial nerves, which is originate from the pons, that is trigeminal, abducens, facial, and vestibulocochlear. Next one is midbrain. It contains the cerebral aqueduct or aqueduct of it contains the cerebral aqueduct, and next is it contains the cerebral aqueduct or the aqueduct of the Sylvius. So here the aqueduct of the Sylvius, that means it is an artificial channel which convey the water typically in the form of a bridge across the gap between the brain stem. And next one is location of the periaqueductal gray. It may abolish the pain when the stimulated. Abolish, that means they end the sensation of the pain when it is stimulated. And next one is cranial nerves, that is oculomotor and trochlear, located in the midbrain. So these all are the summary of the function of brain stem. Next one is cerebellum, the part of the brain that coordinate the movement and the balance. So it is situated behind the pons and immediately below the posterior part of the cerebrum. फर्स्ट थिंग क्या है, इट सिचुएटेड बिहाइंड द पॉन्स, ये पॉन्स के पीछे
बिहाइंड मीन्स पीछे, पीछे होता है. नेक्स्ट, इट इज इमीडिएटली बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम. सेरिब्रम का जो पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे का पार्ट है, जस्ट उसके नीचे बिलो ये सिचुएटेड होता है. सो इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द पॉन्स एंड बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम एंड ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ ऑक्यूपाइंग द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. इट इज ओवॉइड इन शेप, ओवॉइड होता है शेप में, एंड इट हैज टू हेमिस्फीयर दैट इज सेपरेटेड बाय अ narrow median strap which is called vermis. So here this is the vermis which separate the two hemisphere, and the gray matter form the surface of the cerebellum and the white matter lie deeply within the cerebellum. The functions are the coordination of voluntary muscle movement, all type of voluntary muscle action, posture, balance, they all are coordinated by the cerebellum. Next, it control and coordinate the movement of the various group of the muscle which ensure the smooth, even the precise action. Precise means clear and accurate action. Next, it coordinate the activity associated with the maintenance of the posture, balance, equilibrium, all. The cerebellum may also have a role in the learning and language processing. Next one is gray matter and white matter. So the white matter, it is a myelinated process which is white in color, and the gray matter, this contains nerve cell body, dendroids, axon terminals, bundle of unmyelinated axons and neuroglia. एंड इन द स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर परफॉर्म द एच शेप. सो आप जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एच शेप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है. दिस इज द ग्रे मैटर. सो इट फॉर्म द एच शेप्ड इनर कोर सराउंडेड बाय द वाइट मैटर, जो कि वाइट मैटर से कवर्ड है. एंड अगर हम अदर साइड में देखते हैं, फ्रंटल सेक्शन देखते हैं, सो इट इज़ अ आउटर थिन आउटर शेल ऑफ द ग्रे मैटर्स विच कवर द सरफेस, एंड इट्स फाउंड इन द क्लस्टर विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो दिस इज द ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. नेक्स्ट थिंग इज दैट द ग्रे मैटर it contains make the 40% part of the brain, and the white matter it makes the 60% part of the brain. Gray matter, it contains most of the brain's neuronal cell body. It is made up of the bundles which connect the various gray matter area. इसमें बहुत सारे बंडल्स का बना होता है, जो कि क्या करते हैं, ग्रे मैटर्स के बहुत सारे एरियाज को ये कनेक्ट करता है. इट सर्व्स टू द प्रोसेस इंफॉर्मेशन. ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. It allow the communication to and from gray matter area and between the gray matter and the other parts of the body. ये क्या करता है, कम्युनिकेशन को अलाउ करता है, किससे, ग्रे मैटर को, साथ ही साथ ग्रे मैटर एरिया से जितने भी कम्युनिकेशन आ रहे हैं उनको भी अलाउ करता है, एंड बिटवीन द ग्रे मैटर एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. इट फुली डेवलप्स वंस अ पर्सन रीच हिज और हर 20s. जैसे मतलब कि जो पेशेंट अपने 20 ईयर्स का, जैसे जो पर्सन है वो 20 ईयर्स का हो जाता है, तो ये फुली डेवलप हो जाता है, जो ग्रे मैटर वाला पार्ट है. वाइट मैटर, इट डेवलप्स थ्रू आउट द 20s एंड पीक्स इन द मिडिल एज. सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. ग्रे मैटर, it has the pinkish gray in color, living in the living brain, and it contains cell body, dendroid, axons, terminal of neurons. So it is where the all synapses are, and the gray matter contains the glial cell, axon tracts, neuroglia, dendroid, unmyelinated axon, etc. and as well as the capillary blood vessels also. They are the regions in the central nervous system that have an external layer of the gray matters, primarily like the cerebrum or cerebellum. Both are the examples. Next is the white matter. As their colors is the whitish. जो white matter है वो white color का होता है, gray matter grey color का होता है. So as their color is whitish, these structure are called as the white matter. It is the made up of axons which connect the different part of the gray matter to the each others. ये क्या axons से मिलके बने होते हैं, जो कि gray matter के different parts को connect करते हैं, and also allow the communication to the gray matter and from the gray matter. The white matter contains the glial cell which is responsible for the production of myelin, that is called oligodendrocytes and the astrocytes.
The gray matter, it forms a butterfly like structure and it is covered with the white matters. The gray matter, it play a key role in the controlling of sensory and the muscular activity like learning, memory, cognitive process, attentions. The function of gray matter in the cerebellum is related to motor control, control of balance, precision and the coordination of movement. The white fatty myelin, it is important for the insulation of the axons. Insulation is necessary here to stop the excess electric activity, and these allow the faster signal transport and directly affect the normal sensory and motor function. So this is all about the gray matter and white matter. So here the summary of the functional area of brain. Now I will summarize the functional area of the brain. So first one is motor area. This is the motor area, and the function of the motor area, that is control of the voluntary muscles. Next one is sensory area. The function are the skin sensation like sensation of temperature, sensation of pressure, sensation of pain related to skin. Next is frontal lobe, which is the part of the cerebrum. So the cerebrum, that for the movement of the functions of frontal lobe, that is movement, problem solving process, concentration, thinking, behavior, personality and the mood. Next one is Broca's area, which is the functional area of the cerebral cortex. So the function of the Broca's area, that is speech control. Next one is temporal lobe, which is also part of the lobe of the cerebrum. The functions are hearing, language and memory. Next one is parietal lobe, which is also a part of the cerebrum. The function are sensation of touch, language, perception, body awareness and attention. Next one is occipital lobe. The function are vision and perception. Next one is Wernicke's area, that is language and comprehension. Next one is brainstem. The function of brainstem is consciousness, breathing, regulation of heart rate. Next, last one is the cerebellum. The function are the control the posture, control the balance and coordination of the movement. So these all are the functional area and function of the brain. Thank you.